क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपको फिजिकली ही नहीं बट मेंटली भी पूरी तरीके से टेस्ट करता है। सालों से हमने देखा है कि हर एक क्रिकेटर प्रिपरेशंस में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटली स्ट्रांग होने के लिए भी उतनी ही मेहनत करता है। एक कंप्लीट क्रिकेटर कभी भी कोई भी हालत में स्ट्रांग होकर डिफिकल्टीज का सामना कर लेता है। बट हाउ डू यू बिकम मेंटली स्ट्रांग? We hear so many stories of how the biggest of the cricketing superstars overcome failure, make comebacks, and rise above it. And one such instance of mental excellence comes straight to our minds when we talk about being strong mentally. कहते हैं इंडिया ही नहीं पर वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की छवि एक अलग ही स्तर पर है। But all these runs and records weren't just the physical training or their talent, but the fact that both the batsmen were mentally tough as well. In a very funny but smart move, Sachin and Dravid helped India bail out from the jaws of defeat. In 1999, New Zealand had toured India for a 3-match test and a 5-match ODI series. In the first test, interestingly, पहली इनिंग्स में इंडिया सिर्फ 83 रन्स पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सिर्फ 3 ही बल्लेबाज डबल डिजिट का स्कोर बना पाए थे। टेस्ट मैचेस में जब फर्स्ट ही इनिंग्स में आप इतने बैकफुट पर चले जाते हैं, तब वहां से कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। एंड इन दीज क्रंचिंग टाइम्स टीम इंडिया को जरूरत थी एक तगड़े और मिरेक्युलस कमबैक की। न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स में 215 रन्स करके एक कमेंडेबल लीड हासिल कर ली थी। पहली इनिंग्स में 132 रन्स की लीड और स्विंगिंग कंडीशंस ने ऑलरेडी इंडिया को बैकफुट पर डाल दिया था। हाउएवर, टीम इंडिया के ओपनर्स ने दूसरी इनिंग्स में ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ शानदार शुरुआत की, पर मैच को बचाना अभी बाकी था। एंड दिस इज वेयर वन ऑफ द फाइनेस्ट कमबैक्स इन टेस्ट क्रिकेट वाज स्क्रिप्टेड by two of India's batting stalwarts, Sachin Tendulkar and Rahul Dravid. टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 3 विकेट्स खोकर 505 रन्स जड़ दिए। The comeback was definitely stronger than the setback which Team India faced in the first innings. But then again, there was a very interesting story that happened in the middle when Rahul Dravid and Sachin Tendulkar built their 229-run partnership. सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब यह टेस्ट चल रहा था, तब न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस केन्स ने दोनों बल्लेबाजों को अपनी रिवर्स स्विंग से काफी परेशान किया था। इन देयर प्राइम, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को रिवर्स स्विंग से बीट करना बहुत ही बड़ी बात थी, और हम सोच सकते हैं कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज कितनी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। रिवर्स स्विंग में गेंद शाइनी साइड तरफ स्विंग होती है और दोनों बल्लेबाजों को गेंद की शाइनी साइड स्पॉट करने में काफी दिक्कत हो रही थी। आफ्टर गेटिंग बीटन फॉर 4 to 5 times, both Dravid and Sachin came up with a strategy. And I met with Rahul in the middle of the wicket, in the middle of the over. I said, I've got an idea. And he said, do you want to share it now or after the over? I said, I'll share with you after the over, but it can work. So Rahul said, okay, tell me now, what is your idea? I said to Rahul, I am closer to the bowler, and when he's walking back on the run-up, I need to stand here. When he's walking back onto his run-up, I would be watching him closely, and I'd be watching the ball. Which side is the shiny side and which side is the rough side? So Rahul said, then what happens after that? I said, whichever side is the shiny side, I will hold the bat in that hand. If he's going to bowl an outswinger, the bat is going to be in my left hand. If he's bowling in swinger, the bat is in my right hand at the non-striker's end. So that's the only time in my career when the batsman is ready to face the ball. He's not watching the bowler, he's watching the bat in my hand. So he's very good. So Rahul is watching me, and suddenly you see a couple of cover drives being hit for boundaries, and on drives passing
piercing mid-wicket and mid-on, and Chris is like wondering, I mean, these guys were getting beaten a couple of times every over, and suddenly I'm giving away a couple of boundaries. There's definitely something wrong. So all the fielders were watching me because I was, watching Chris and not Rahul. And normally, no batsman stands facing the bowler. He would be like facing the other batter. And then I would quickly change the bat, and by then they had sort of figured out that there is something fishy. And Chris lost his momentum, he lost his rhythm, and he held the ball cross-seam, and he bowled a ball, and instead of looking at Rahul or checking what has happened there, he looks at me and I said, "What have you got for this?" Chris didn't realize that I had also warned Rahul that if I don't know what is coming, I'm going to hold the bat in the middle. So that is how the story goes. और इसी तरह टीम इंडिया ने द्रविड़ और सचिन की सूझबूझ भरी जुगलबंदी के कारण ना सिर्फ ये मैच बचा लिया, बट दे सेंड द राइट मैसेज अक्रॉस द फ्लोर कि क्रिकेट इज डेफिनेटली अ गेम वेयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड क्विक एंड इम्प्रॉम्प्टू थिंकिंग कैन हेल्प यू विन नॉट जस्ट अ गेम बट ऑल्सो अ सीरीज. Stay tuned as we will be back with more such interesting stories from the cricketing universe. Till then, it's a goodbye.